हाय फ्रेंड्स, आई हैव बीन अ सीएफओ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उससे क्या होता है कि वी आर द मैनेजमेंट। हम लोग कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, गाइडेंस, ग्रोथ के ये सब इन्वेस्टर्स को बताते हैं। नाउ व्हेन आई एम ऑन द रिसर्च साइड, दैट गिव्स मी एन एडेड एडवांटेज टू बी एबल टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड द लाइक्लीहुड ऑफ द गाइडेंस एक्चुअली हैपनिंग। हाय फ्रेंड्स, आज हम वो टॉपिक पे बात करेंगे जिसका सबको इंतजार है। Q4 FY25 रिजल्ट्स की बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि देर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस नॉइज इन द फर्स्ट 3 quarters द इंडियन इकोनॉमी हैज slowed down, द अर्निंग्स ग्रोथ हैज slowed down to the extent कि प्रैक्टिकली Q2 में कोई अर्निंग्स ग्रोथ नहीं थी NSE 500 कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। बट बिफोर दैट, जैसे ही रिजल्ट सीजन चालू होने वाला था, 3 बड़े शॉक्स हुए हैं विच आर बियॉन्ड फाइनेंशियल मार्केट्स और मॉनेटरी मार्केट्स, which will typically have an effect on these markets. The good news is that the global markets and economies have been stable amidst all this uncertainty. So सबसे पहले तो 2 अप्रैल को एक अनप्रेसिडेंटेड एक यूएस प्रेसिडेंट का बिहेवियर देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने कंट्री वाइज एक बड़ा कार्ड निकाला, कंट्री वाइज परसेंटेजेस थे और वो टैरिफ कार्ड था। सो टैरिफ ये है कि वाइल अदर कंट्रीज आर एक्सपोर्टिंग गुड्स इनटू द यूएस, तो उनको कितना परसेंटेज टैरिफ लगेंगे, मीन्स उससे उतनी प्राइस बढ़ जाएगी। This was done so that he wanted to promote manufacturing in the US. But within a week, it all fizzled out. काफ़ी backtracking हुआ, काफ़ी back and forth हुआ, और एक ट्रेड वॉर जैसा चाइना पे डिक्लेयर हो गया। So there was an understanding that this was mainly made to change the dynamics of imports that US is heavily dependent on China. And then it led to tentativeness of global trade. लेकिन आज जैसे उस घटना को 2.5 months हुए हैं, there have been lots of announcements, changes, maybe 4 or 5 times a day. Incremental risk needs to be receding, और मार्केट्स इसको अभी डिस्काउंट कर रहे हैं। मतलब मार्केट सोच रहे हैं शायद कि इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, कंसिडरिंग हिज बैक एंड फोर्थ बिहेवियर, अनलेस टुमारो एनीथिंग रियली हैपन्स विच इज अ कॉज फॉर वरी। इंडो पाक टेंशन आपको पता है, 22 अप्रैल को एक अनफॉर्चुनेट पहलगाम कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ, एंड देन इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान during the first 10 days of May, एक almost war जैसा situation create हुआ, and then there was a regional risk spike due to the fragile relations of the two neighbors since their independence. But अभी luckily 10 मई के बाद de-escalation हुआ है, and there has been no new bad news, no new further war kind of situation. But वो सबसाइड होते ही ईरान एंड इसराइल में एक अलग कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया है, जहाँ पे इसराइल इज मेकिंग एवरीबडी बिलीव दैट ईरान इज गोइंग टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। आज नहीं है लेकिन कभी भी एक्वायर कर सकते हैं, और एक ग्लोबल थ्रेट है, स्पेशली इसराइल के लिए इट इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। इससे मिडल ईस्ट रीजन हैज कम अंडर स्ट्रेस। क्रूड ऑयल विच हैज बीन लो एज अ प्राइस विच इज गुड फॉर ऑल इकोनॉमीज एंड लो इन्फ्लेशन, सडनली देयर वाज अ स्पाइक इन द लास्ट 10 days, and there is a global volatility of trade as well as due to many other reasons linked to the Middle East conflict. These tensions may escalate and remains to be seen that अभी तक जो मार्केट शांत है उस पर रिएक्ट करता है क्या। Coming back to the Indian economy, we have seen that in 2024, for many key essential items, there was a big inflationary situation. वो हमने डिटेल में हमारे वीडियो में कवर किया है, उसको ज़रूर वॉच कीजिए। एंड द फूड इन्फ्लेशन ऑल्सो वॉज वेरी हाई विच अफेक्ट्स एवरी हाउस होल्ड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है लास्ट 15 to 20 days में, एक तो सॉफ्टनिंग ऑफ द क्रूड प्राइसेस विच हैज़ बीन ऑन फॉर अ फ्यू मंथ्स। RBI has further cut repo rates, so this is the third cut that has happened, which will reduce the EMI burden of the loans that middle class and regular households have, will eventually drive consumption and boost credit growth. Income tax cuts budget 25 में हुए हैं, so combining all these positives and the easing liquidity measures of the RBI, we see that maybe the worst is behind us, and the consumption pattern, the consumption growth is going to revive in FY26. So now let's come to what we have been waiting for, कि Q4 और फुल ईयर रिजल्ट्स ऑफ FY25 और FY24 कैसे रहे। सो सबसे पहले NSE 500 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लास्ट 8 quarters के हम लोग आपके लिए बार चार्ट लाए हैं। सो गोज विदाउट सेइंग दैट Q1 and Q2 of FY24 we have some unprecedented growths of 43 and 46% due to this high base effect, as well as other reasons that happened in the first half of this year, whether it was elections, curtailing of government expenditure and many other things. We had very low growths on top of this in Q1 and Q2. And then in Q3, we had a good revival, which was of course limited to certain sectors,
विच इज ऑलवेज द केस. कभी भी कोई भी रिवाइवल, कोई भी रिकवरी ऑल सेक्टर्स में यूनिफॉर्मली नहीं होती है. एंड इन Q4 what we see is that in spite of having a 20% high growth last year, Q4 we have a 9% growth. So while it looks lower than Q3, we've got some very interesting data points for you to suggest that Q4 में there are really some green shoots in many good sectors, and we expect that Q1 onwards we will have more good news. So NSE 500 में जैसे हमने देखा, the PAT growth is 9.2% for this quarter over the Q4 of last year. Revenue growth is 6%. यहाँ पे जो BFSI कंपनीज है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इनकी ग्रोथ थोड़ी कम रही है कंपेयर टू द ओवरऑल फॉर द 500 कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एंड नॉन BFSI हैज बीन हायर, एंड in fact the PAT growth is in double digits. For the full year you have a slightly higher number of revenue growth and you have a lower number for PAT growth. But last 5 years के आप देखोगे तो you will be shocked because you have had some unprecedented growth numbers. आपकी जो अर्निंग्स की जो CAGR है that has been 31%, no less. And hence as they say the prices are a slave to the earnings. इसलिए the index price CAGR has been 25%, sorry, which means Nifty 500 के 500 companies के compounded annual growth rate of the prices of these companies have been 25% over a 5-year period. That has been amazing. And in the subsequent slides we will see कि इसका overall market के premiums पे, valuations पे और इन टाइप के इंडिकेटर्स पे एक सस्टेन्ड पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा है. Just a quick look at some of the sectors which did exceedingly well and some which didn't. So telecom was a top performer with a PAT growth in Q5 of 558%, followed by fertilizers, agrochemicals, metals and fintech. And those that were the laggards were paper, retailing, some oil companies and automobiles. Now let's look at Nifty 50, which is the largest market capitalization companies in the listed universe in India. यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही अलग नंबर्स देखने को मिलेंगे. ग्रोथ इज ओनली 6.1% ऑफ द रेवेन्यू, बट पैट ग्रोथ तो सिर्फ 0.8 है. और इनफैक्ट BFSI कंपोनेंट्स की पैट ग्रोथ -3.5 है एंड नॉन BFSI की 3%. सो इट्स लाइक अ बैलेंस. -3.5 और 3 ये दोनों ने बैलेंस करके एक नेट पॉजिटिव कुछ तो ग्रोथ आई है. इफ यू लुक एट द फुल ईयर नंबर FY25 और FY24 for Nifty 50, so revenue growth is slightly better and PAT growth is certainly better than this abysmally low number. But in the last 5 years, what you will see is the earnings CAGR has been 21%, while the index price CAGR has been much higher than that. So दोस्तों ये बहुत ही rare occurrence है that over such a long period of 5 years, first of all your earnings are growing at compounded 21% and your index price CAGR has been running 50% ahead of that at 32%. So it goes without saying that अगले कुछ सालों के लिए हमें अपने प्राइस ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज currently the PAT growth seems to be at one of the lowest in history. Now there is a very very pleasant upside, a big one in the mid cap 150 segment. यहाँ पे revenue growth 8.4% रही है and जो PAT growth है वो 28.7% रही है, which is humongous. Even the BFSI elements have done very well over here. 9.2 revenue growth and 17.2 PAT growth, and excluding BFSI तो आपको एक PAT growth मिलेगी 37.1%. Even for the entire year the PAT growth is 21.8%, which is again very good. So दोस्तों यहाँ पे we would like to touch on one point. जैसे हमने लास्ट 7-8 महीने में जब मार्केट में एक ओवरऑल करेक्शन आया तो काफ़ी सारे फंड हाउसेस से बार बार सुना है कि the mid cap and the small cap valuations and the pricing has been very high. The large cap seem to be relatively fine in terms of fair valuations. But अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जो Q4 के रिजल्ट्स है जहाँ पे निफ्टी ग्रोथ्स आर ओनली 0.8% एंड स्टिल इट हैज अ प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ मोर देन 20, एंड जहाँ पे मिड कैप सेगमेंट हैज 28.7% पैट ग्रोथ और उसकी जो पी है प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 35 के ऊपर है. तो रिलेटिवली आप देखोगे तो मिड कैप का थोड़ा ज्यादा जस्टिफाइड है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ हायर पी compared to the Nifty. So this is what would be the right interpretation of numbers. When it comes to valuations and pricing, any absolute numbers and absolute interpretation should be avoided. Let's move on to small cap 250. यहाँ पे we have a good revenue growth and a good PAT growth, better than Nifty 50. यहाँ पे again एक reverse trend दिखा है कि BFSI elements have a much higher growth rate of the PAT compared to ex-BFSI. And even for the full year, there are decent numbers for the small cap index.
अभी हम देखेंगे हिस्टोरिकल पीबी क्या रहा है, दैट इज प्राइस टू बुक मल्टीपल। अभी हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक मल्टीपल जो है वो बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। तो 2.9 से 3.5 इसकी रेंज थी फ्रॉम FY16 to FY19, इट वाज स्टेडीली गोइंग अप due to the COVID crash. And in that particular year, as we know, most of the companies had various periods of lockdowns and hence they were not operational for the full year. That contributed to a PB of 2.5 this fall. And then it has shot up to 4.2 and has remained sustained at that level. So, do we feel that the Indian market overall pricing has got a premium which is much higher than earlier? The answer is yes. Is it supported by very high earnings? Answer is yes. Whether this is sustainable at these levels, we don't know. जैसे हमने देखा NSE 500 elements have been growing at a earnings growth of 31% over 5 years. ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज जैसे हमने देखा Q1 और Q2 में भी जब आपका प्रीवियस पीरियड बहुत हाई ग्रोथ का रहता है तो उसे बेस इफेक्ट बोला जाता है, दैट इटसेल्फ विल लीड टू अ स्लाइटली लोअर ग्रोथ इन द सब्सिक्वेंट पीरियड्स. द गुड पार्ट इज इन FY25, since we have had muted growths compared to the earlier years, now the base effect will have a positive connotation, which means at growths at 3%, 7%, 9%, इस साल की बेस कम है तो अगले साल these weighted average numbers can look better if the economy and the corporates perform better. So this is what we had about the relative valuations. Last but not the least, in the last 2.5 months, when the result season is on from 15th-16th April to about the 10th of June, which are the sectors which have done a good price work? वहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑटो, these have had a good price run. These have also done well relatively in the last 6 to 7 months of the market correction, and these were the laggards in the earlier bull run that happened in 23-24. और यहाँ पे आप देखोगे कि some of the मेन इंडस्ट्रीज जैसे रियल्टी है, FMCG है, हेल्थ केयर है, फार्मा, IT, all these have not done well. Their price action or the prices have actually given a negative return in these 75 days. So that's all we had, and to conclude, it is very clear that the economy seems to be on a revival phase compared to what we saw in H1 of this year. The base effects are going to matter for FY26. We have studied in detail and we have covered the results where we have seen that कुछ pockets में जहाँ पे growth high है, बहुत high है, and they are likely to continue to do well, and कुछ pockets में काफी low है. So overall the weighted averages look misleading in terms of how some of the tailwind sectors are performing. And as we all know, हमें एक 4,000 4,500 कंपनीज के लिस्टेड यूनिवर्स में से फाइनली यू नीड अ few companies, few stocks to be multi-baggers to actually make generational wealth. So stay tuned, we'll bring you quarterly results, and that's all for now.